This is 131st module of financial management, and this discussion is about coefficient of variation. Coefficient of variation is a concept which is used to compare and contrast the risk and return of more than one stocks. यानी अगर हम दो या तीन या चार डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स या डिफरेंट स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को आपस में कंपेयर करके ये देखना चाहें कि किसका रिस्क और रिटर्न ज़्यादा है और किसका कम है, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बहुत मदद करता है. बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू दिस discussion and calculation of coefficient of variation, it is important to know that there are two types of comparisons which are possible. One which is absolute and the other one which is relative. Absolute का मतलब क्या है? यानी हम ये कहते हैं कि 10% 20% से कम है, 15% 11% से ज़्यादा है. This is actually an absolute amount of percentage that we are comparing. But then we have to see that if the risk of one stock is there on a particular average return that is being provided, then in relation to that expected return is the risk more or less. यानी किसी कंपनी या स्टॉक का इंडिविजुअल रिस्क इन टर्म्स ऑफ नंबर तो शायद हमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो, लेकिन क्या वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न के रेफरेंस से भी ज़्यादा है? So this is something which is called a relative analysis, and here coefficient of variation helps us a lot. Let's have a look at the definition of coefficient of variation before we proceed further for its calculation. It states that coefficient of variation is a measure of relative dispersion. Dispersion is deviation from the mean. Dispersion का मतलब है फैला हुआ होना, यानी हमारे जो रिस्क है वो कितना फैला हुआ है, अपने मीन से कितना दूर है. And that is per unit of expected return. So coefficient of variation is nothing but it is the risk per unit of our expected return. So now let's see that how we can calculate this coefficient of variation, and what do we need, what data is required to calculate the value of coefficient of variation, and how would it help us as an investor to make our decision regarding putting our money in a particular stock. यानी ये वो फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने के लिए कि कौन सा स्टॉक दूसरे के मुकाबले में बेहतर है in terms of its risk and return. This formula is simply the relationship of standard deviation and the mean. यानी इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी स्टॉक का निकालने के लिए हमें सिंपली उसका रिस्क कैलकुलेट करना होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर उसके कैलकुलेटेड मीन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे. तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा विच मे बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बट दिस एब्सोल्यूट वैल्यू actually shows the coefficient of variation. Now let's see the calculations of this coefficient of variation and see that how these calculations and the result of coefficient of variation could help an investor decide about the investment or putting the money in the stocks. You can see on the slides that there are two companies which are comparable to each other, and an investor has to decide whether to put money in company A or in company B. The data that is available to do the calculation is the mean value and the standard deviation value. यानी coefficient of variation calculate करने के लिए पहले हमें expected return की calculation करना होगी और risk की calculation करना होगी. ये calculations हम
पहले देख चुके हैं कि कैसे की जाती हैं. So if we have already calculated these values, so these are available to us. Let's have a look at company A. In case of company A, our expected return is 10% and that of company B is 20%. यानी company B का expected return company A से 2 गुना है, it's double. When it comes to risk, the risk of company A is 8%, that is the probable deviation, and that of company B is 12%. अब जो मैंने शुरू में बात कही कि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो कंपनी बी बज़ाहिर ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नज़र आती है कंपनी ए के मुकाबले में, क्योंकि कंपनी बी का रिस्क 12% है और कंपनी ए का रिस्क 8% है. तो अगर हम एब्सोल्यूट एनालिसिस तक महदूद रहेंगे तो हम ये फैसला करेंगे कि कंपनी बी क्योंकि ज़्यादा रिस्की है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, which is the relative risk, and it is calculated by dividing the risk with the expected return. यानी कंपनी ए के केस में we'll divide 8% by 10% or 8 by 10 and we get an answer of 80%. यानी कंपनी ए का रिस्क उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले में 80% है. And when we do the same calculations for company B, that is divide 12% by 20% or 12 by 20, we get an answer equal to 60%. यानी कंपनी बी का रिस्क उसके रिटर्न के मुकाबले में 60% है और कंपनी ए का रिस्क उसके रिटर्न के मुकाबले में 80% है. So from here, what do we conclude? And in this module, this is what we would state, that an investor should not only consider the individual percentage of risk, but the more important element, and particularly when it comes to the calculation of comparison and making investment in one of the two, is the relative risk, and which is the coefficient of variation. और इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का ज़्यादा है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि ए कंपनी की जो रिस्क का लेवल है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कंपनी बी. और अगर हमसे कोई ये सजेशन चाहे कि क्या हमें ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या बी में विद रेफरेंस टू द level of risk, so we would suggest that company A is better than the company B.